Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Dear students, welcome to the science class. This is your science book which is Science Fact File 1. Dear students, we are studying the chapter number 7 which is forces and their effects. Today we are going to start the topic stretchy materials on the page number 92. First of all, what is stretchy materials? Stretchy materials are those materials when we apply the force on these materials, their length may increase, and after removing the force, they come back to its original shape and length. These are called stretchy materials, and this property of stretchy materials is known as elasticity. So let's start reading and understand the concepts which is given in this topic. Forces can cause materials to stretch. When the forces are removed, the material may spring back to its original length. We call this elasticity. Dear students, जब हम किसी भी स्ट्रेचिंग मटेरियल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेचिंग मटेरियल्स की लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है और जैसे ही फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो मटेरियल दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और लेंथ में वापस आ जाएगा। ऐसे मटेरियल्स को इलास्टिक मटेरियल या स्ट्रेचिंग मटेरियल्स कहते हैं और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रबर बैंड can be stretched to several times its length, but it will still return to its original size when released. Rubber is a very elastic material. Metal wires will also stretch and spring back into shape if the forces are small. However, if the forces are too large, the wire will go beyond its elastic limit and be left permanently stretched. स्टूडेंट्स, मेटल वायर्स के अंदर भी इलास्टिसिटी पाई जाती है लेकिन बहुत कम इलास्टिसिटी होती है। जब हम बहुत कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये मेटल्स की वायर्स स्ट्रेच हो जाती हैं और आफ्टर रिमूविंग द फोर्स ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती हैं और ओरिजिनल लेंथ में भी। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो मेटल वायर्स अपनी इलास्टिक लिमिट से बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगी, जिसकी वजह से ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप और लेंथ में वापस नहीं आएंगी और ये परमानेंटली तौर पर स्ट्रेच्ड रहेंगी। द नेक्स्ट वन इज स्प्रिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, स्प्रिंग इज आल्सो अ स्ट्रेचिंग मटेरियल्स एंड व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द स्प्रिंग्स इट्स लेंथ इज इंक्रीज एंड व्हेन वी रिमूव द फोर्स दे कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड original length. So, springs are very useful because when forces are applied, they stretch and spring back into shape evenly. In the example shown below, the metal springs stretches 10 mm of every 1 Newton of force added. Students, as you know that spring is also an elastic material, and when we apply the force on these springs, they may cause extension. स्टूडेंट्स, जब भी हम इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स को अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन पैदा होगी और इसकी लंबाई इंक्रीज़ होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स को ऐड कर रहे हैं तो स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है यानी कि उनकी लेंथ 10 मिलीमीटर इंक्रीज़ हुई है और जब हमने फोर्स को इंक्रीज़ किया यानी 2 न्यूटन किया तो जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो 20 मिलीमीटर हो गई। यानी फोर्स के अप्लाई करने से एक्सटेंशन इंक्रीज़ हो रही है और हर एक न्यूटन फोर्स के बाद 10 मिलीमीटर लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। जस्ट लाइक दैट, इफ़ वी ऐड द 3 न्यूटन फोर्स द एक्सटेंशन विल बी 30 मिलीमीटर। द ग्राफ गोज़ अप इवनली फॉर 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। इफ़ वी ऐड मोर देन 4 न्यूटन द स्प्रिंग स्टिल स्ट्रेचेस but it does not follow the same pattern. Dear students, the graph shows that when we apply the force on a spring, the extension in the spring is also increased, and after a elastic limit, the graph will not follow the same pattern, and their limit is limit of Hooke's law. Students, when we increase the force on a spring, the extension will also increase. Here you can see that, and the graph is straight line, and after a specific limit the graph will not follow the same pattern
because the force is too much and it exceeds from the limit of Hooke's law. And this limit is elastic limit. Did you know? Robert Hooke was an English scientist who investigated elasticity. He found that many materials and springs extend evenly when stretched by forces, provided that the force do not get too large. This is known as Hooke's law. Students, now we are going to start the test yourself on the page number 93. The first question is, what is elasticity? The answer is the ability of the body to return to its original length after being stretched. The B part is, explain what elastic limit means. The answer is elastic limit is the maximum amount of force beyond which the material which is being stretched will not come back to its original length. The second question is, explain why rubber is a good material for making. The A part is elastic bands. The answer is rubber is a very elastic material. It can stretch several times its original length, so it is useful for making rubber bands. The next question is, explain why rubber is a good material for making bicycle tires. The answer is, since bicycle tires need to bear a lot of pressure of the air inside them, the elasticity of the rubber helps them to bear the pressure without bursting. The third question is, why are springs good force measures? The answer is, springs are good force measures because when force are applied, they stretch and spring back into shape evenly afterwards. The fourth question is, explain how you could use a spring, a ruler, some standard meshes, and some graph paper to find the weight of an unknown object. The answer is, hang a meter ruler and a strong spring from a nail. Mark the position of the end of the spring on the ruler. Hang the given standard meshes to the end of the spring and note the extension in the spring on the ruler. Now hang the unknown object on the spring and mark the extension of the spring on the ruler. Use the obtained information to plot a graph and calculate the weight of the unknown object. The next question is, a spring stretches by 10 cm when a force of 20 Newton is applied. When a force of 22 Newton is used, the spring stretches by 11 cm. स्टूडेंट्स, जब हम एक स्प्रिंग के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्प्रिंग के अंदर जो स्ट्रेचेस है या एक्सटेंशन है वो 10 सेंटीमीटर हो रही है, और जब हम 22 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो एक्सटेंशन है वो 11 सेंटीमीटर है. तो आपने बताना ये है, व्हाट वुड बी द एक्सटेंशन फॉर फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 15 न्यूटन. आपने इन फोर्स के लिए एक्सटेंशन बतानी है कि अगर हम इतनी फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंशन क्या होगी स्प्रिंग के अंदर. द आंसर इज़, for 10 Newton force, the extension will be 5 cm, and for 1 Newton force, the extension will be 0.5 cm, and for 15 Newton force, the extension will be 7.5 cm. The next question is, suggested what the extension of the spring might be if a force of 30 Newton was applied. Dear students, अगर हम 30 Newton force apply कर रहे हैं तो उस spring के अंदर कितनी extension होगी? As you know that if we applied the 30 Newton force, the extension will be 15 Newton. I hope you understand the basic concepts which is given in this topic. Stay safe at your homes and keep praying for your country. Thank you so much. Allah Hafiz.